Hello, dear kids. Namaskar. Hope you all are fine and safe at your home. Yesterday, we have completed the chapter number 13. Right? हमने कल रिवीजन भी कर लिया ये चैप्टर का. Yes, and also we have completed section first of this chapter. Right? I hope you all have written it. Yes, have you completed your homework? I have given you to write 2 times planets name. Right? मैंने आपको 2 times planets के names लिखने दिए थे. Because आपको वो planets के name याद रह जाए. Right? I hope you all have completed that and you remember all the names of planets. Now, can you say me how many planets are there? There are 8 planets, right? Can you name them? Yes, can you name them? Mercury. Then, second planet, Venus. Third planet, Earth. Yes. Number 4th, Mars. Number 5th, Jupiter. Number 6th, Saturn. Number 7, Uranus. And number 8, Neptune. So there are total 8 planets in our solar system. Yes. Now, what we are going to do today? Today we are going to discuss short question answers. Right? हम आज short question answers करेंगे and also we will do skill builder. Right? हम skill builder भी करेंगे आज. Skill builder, you have to just listen to me. Right? जो क्वेश्चन आपको लॉजिकल क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको माइंड में रखने हैं. Okay? So now, let's start with short question answers. Number first, what is the solar system made up of? Solar system किससे बनी है? Right? Do you understand the question? What is the solar system made up of? Solar system किससे बनी है? So, how you will write the answer? किससे बनी है solar system? The sun and its 8 planets. Right? Solar system में क्या included है? Sun and its 8 planets together form the solar system. Right? So, what is the solar system made up of? How you will write in the notebook? See, like this way, the sun and its 8 planets together form the solar system. Okay, all right. Now, let's see second question. Define planets. Now, you have to give the definition of planets. Right? Planets की definition आपको बतानी है. So, how you will write planets क्या है सबसे पहले? Planets are the object that move around the sun in a fixed path. Yes or no? What are planets? Planets क्या है dear kids? Planets are the object, yes, that move around the sun. And they move in a fixed path, which is called orbit. Planets do not have their own light. Planets के पास अपनी light होती है? No, planets do not have their own light. They reflect the light of the sun. Right? उनके पास अपनी खुद की light नहीं होती है. They reflect the light from the sun. Right? So how you will write in the notebook? Planets move around the sun
in fixed path called orbits. Right? फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे आप कि planets क्या है? Planets are the object that move around the sun in a fixed path which is called orbits. उसको हम क्या कहते हैं? Orbits. So planets move around the sun in fixed path called orbits. Planets do not have their own light and reflect the light from the sun. Understood? Now let's see the third question. Third one, what is a satellite? Satellite क्या है? What is a satellite? So satellite क्या है? Satellite is an object that move around a planet. Satellite क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के अराउंड मूव होता है. जैसे कैसे प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन लाइक दैट वे. जो सैटेलाइट्स हैं दे मूव अराउंड अ प्लैनेट. यस, एंड हर एक प्लैनेट के सैटेलाइट्स होते हैं. लाइक अर्थ के सैटेलाइट कौन है? डू यू रिमेम्बर? अर्थ का सैटेलाइट कौन है? Moon. Moon is a satellite of Earth. So like that way, each planet have its own satellite. Right? So what is a satellite? Satellite क्या है? A satellite is an object that move around a planet. Okay? Do you understand this third one? So now let's move to number 4th question. Define phases of the moon. Now in this you have to give the definition of phases of the moon. Right? So phases of the moon क्या है? Different shape of the moon. Yes, जो हम देख सकते हैं in the night sky. Yes or no? So how you will write the answer? The different shapes of the moon that appears in the night sky is called phases of the moon. Right? So phases of the moon क्या है? जो हमें different shades देखने मिलते हैं moon के रात को in the night sky. Yes, that is called phases of the moon. So now let's see the answer. The different shapes of the moon that appears in the night sky is called phases of the moon. Okay? Like this way you are going to write in the notebook. The different shapes of the moon that appears in the night sky is called phases of the moon. Okay? So now let's see the next question, number 5th. Define constellation. Now here we have to give the definition of constellation. So constellation क्या है dear kids? And हम कब देख सकते हैं? In the daytime or at night? कब हम देख सकते हैं constellation? Constellations are group of stars, right? Yes or no? So the group of stars forming a pattern in night sky that are called constellation, right? So how you will write the answer? The group of stars forming a pattern in the sky are called constellation. Yes, आप इस तरह ये आंसर लिखोगे. Define constellation. So we have to give the definition of constellation. So how you will write? The group of stars forming a pattern in the sky
are called constellation. Done? So here we have completed the discussion of short question answers. I hope आप सबको ये क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए हो, right? And this question answers you are going to write in your notebook. Yes, learn हो गए आप सबके ये क्वेश्चन आंसर्स. प्लीज लुक एट दैट, आपको लर्न भी करने हैं, राइट? सो दिस क्वेश्चन आंसर्स यू आर गोइंग टू राइट इन योर नोटबुक इन होमवर्क. सो नाउ लेट्स डिस्कस स्किल बिल्डर. So come on page number 143. First one, do you think you can live on one of the stars that you see twinkling in the night sky? क्या आपको लगता है कि हम रह सकते हैं स्टार्स के पास, स्टार्स के ऊपर? Do you think that कि we can live on stars? हम स्टार्स पे रह सकते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, राइट? सो कैन वी लीव ऑन स्टार्स? क्या हम स्टार्स में रह सकते हैं? थिंक एवरीवन. एंड रह सकते हैं तो कैसे रह सकते हैं, और नहीं रह सकते हैं, सो यू हैव टू गिव मी द रीजन. सी, वी कैन नॉट लीव ऑन स्टार्स, राइट? Because stars are made up of very hot burning gases. Just like the sun, stars भी बहुत गर्म होते हैं. They are also very hot and they are also made with gases, burning gases, right? And पहली बात, they are very far away from Earth. हम कैसे रहने जाएं स्टार्स पे, हम कैसे रहने जाएं? सो वी कैन नॉट लीव ऑन द स्टार्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वेरी हॉट बर्निंग गैसेस, जस्ट एज द सन, राइट? नाउ फर्स्ट वन अंडरस्टूड एवरीवन. नाउ सेकेंड वन. लुक एट पिक्चर्स गिवन बिलो and write the names of the faces of the moon they show. Now हमें जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो मून के हैं, but they are in the different faces, right? They are in the different faces. So first one is, there are 3 pictures given. First one आपको कैसा पिक्चर दिख रहा है? हाफ मून, राइट? हाफ मून है. सो राइट देयर हाफ मून. राइट विथ मी. देन सेकेंड वन. सेकेंड, द मून इज फुल, राइट? फुल सर्कल इज देयर. एंड फर्स्ट वन क्या था? इट वॉज सेमी सर्कल. सो सेमी सर्कल में जब होता है तब वो हाफ मून होता है, राइट? एंड जब वो फुल सर्कल में है, सो फुल मून. देन द लास्ट, कैन यू सी मून? कैन यू सी एनी मून इन दिस पिक्चर? हाफ भी दिख रहा है क्या? नो, राइट? देयर इज नो मून इन दिस पिक्चर. सो दैट्स व्हाई जब हमें नो मून दिखे, so that is called new moon, right? उसको हम क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं. yes? so complete this second question. Now come to number 3rd. Which do you think is more important to you, the sun or the moon? Give reason. First of all, first clear in your mind what question is given. ये दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सन और मून? थिंक एवरीवन.
हु इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू पर्सनली? आपको सन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मून ज्यादा इम्पोर्टेंट है? किसको ऐसा लग रहा है कि सन ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड किसको ऐसा लग रहा है कि मून ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सी व्हेन वी सी ऑन मून, जब हम ऐसा सोचते हैं कि मून इम्पोर्टेंट है, सो अब मून कैसा है? मून का जो सरफेस है वो बहुत ही रफ है, राइट? मून इज वेरी कोल्ड. Moon does not have its own light. Yes. So हमें मून जो है वो क्या करता है? जस्ट नाइट में हमें लाइट देता है, बट वो भी उसकी खुद की लाइट नहीं है. मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन. यस, ठंडक करता है, हमारा एनवायरमेंट को कूल बनाता है. यस. And what about sun? How many of you is thinking that sun is more important? See, sun हमें क्या देता है? It gives us heat and light. Yes, heat and light देता है. And also for the plants, जो living things है, plants make their food with the help of sunlight. Yes. So plants need sunlight to prepare their food, and वो sunlight उनको कौन देता है? Sun. Yes. So इससे हमें क्या पता चलता है? Who is important? Sun or moon? Yes, the sun is more important because it gives us heat and light. Yes or no? Plants need sunlight to prepare their food. So sun is helpful for them also. But moon, no, does not have its own light. So we think that the sun is more important. So do you understand the skill builder? Skill builder आप सबको समझ में आ गया? What we done today? We discuss short question answers and skill builder. Yes or no? I hope आप सबको ये समझ में आ गया. And today your homework is to write this short question answers in your notebook. Okay, with a good handwriting. Yes, dear kids? Complete your homework. Okay, so bye kids, take care, have a good day. Bye everyone.